Hi friends, SBI PO mains exam is right here. I'm sure all of you are busy fine-tuning your preparation, optimizing your strategy, giving final touches to your preparation, trying to maximize your marks. So the agenda of this small session is to tell you four important things that should follow in these last 4 days to maximize your marks, to optimize your performance, to get the best possible out of the written test. So here we start. The first thing would be general awareness. It's very important that you dedicate the bulk of your time these last few days to general awareness. If you've done it before, if you're thorough with it, you still kind of think that you tend to forget, this is going to help you a great deal. This is going to help you in retention. Revision is the key to retention, right? If you've not done much of it, just done some general awareness, still it's going to be extremely important. So if you've done it, not done it, done some bit of it, for everybody, last 4 days, bulk of it to general awareness, 60-70% of it in general awareness, it makes a lot of sense. Please do it. It's going to help you a great deal in the exam. किया है तो भी करना है, नहीं किया है तो भी करना है, कुछ मार्क्स लेके आने, तो याद रखिएगा, जरूर करिएगा. We have already done a session in October. We'll do it on November, December as well. Quick revision, rapid fire questions will add a lot of value to it. Go through all those sessions plus all the sources, everything that you're referring to, and it should hold you in good stead. My second recommendation for all of you would be to take one full-length mock test on 31st of December. That is 2 days before the exam. Today is 29th. So if you want to take one test today, you can take it, but you will not take it daily. It takes a lot of time to take the test and analyze it. So one test, one final test on 31st of December. This is extremely important. Please follow all the guidelines of the actual exam. So the time slot and everything should be the same. I want you to simulate the conditions. So if you have been taking sectional tests, submitting them before attempting it, you do all kinds of things with mock tests, that's all okay. I want you to take one final mock test in exam like conditions. What does that mean? It means that you even start at the same time. So for example, if you believe that your test starts at 12:30 p.m., just an example, fine, you start at 12:30 and end at 3:30, like that. Whatever other conditions, you just simulate them like that, exactly like that. In fact, you should wear proper clothes the way you would be wearing in the exam hall. You should be wearing a mask. You should be simulating the condition. Simulation का मतलब है एकदम वैसा का वैसा ही conditions रखनी है जैसे एग्जाम में होंगी. No breaks, no mobile phones, no brother, sister, mother disturbing you, nothing like that, no phone calls. कुछ करना ही नहीं है. Even if you feel frustrated in between, मुश्किल है, कुछ है, नहीं छोड़ना है. एग्जाम में छोड़ोगे? Would you leave that in the actual exam if it turns out to be tough? No. So one final test, you can choose any service provider of your choice, whatever, but one final mock test like an exam. You feel frustrated, I'll still not leave it, I'll still need to score something. ठीक है? कुछ भी खराब लगे, कुछ भी गलत लगे, unless you believe कि भूकंप आ गया, earthquake आ गया, नहीं छोड़ना है टेस्ट को. आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? जैसे 2 जनवरी को दोगे, exactly in the same manner you have to take on test on 31st December, irrespective of whether you're taking 10 tests before, not taken any tests. एक ये टेस्ट सबको देना ही है. क्या रीज़न है इसका? When we take the final exam, most of the times you realize कि अरे यार एक छोटा सा पार्ट रह गया था. Oh, I missed out on the small part. Oh, I did not realize this. You make some final mistakes. सब कुछ करने के बाद भी. So you practically you can just think of 2 days left for the exam. Of the situation being as 2 days left for the exam. 29th, 31st. 31st मेरा एग्जाम है. मैं एग्जाम 31st को देने वाला हूँ. आप समझ के बात को? 31st को मेरा एग्जाम है, 12:30 बजे, 1 बजे, whatever time you pick, एंड एग्जाम देने वाला हूँ. एकदम उसी तरीके से देना. There will be a lot of learning for you. Take the test, analyze it properly, look at what you could have done. होगा ना कई बार, you will believe तैयारी ठीक है, but यार यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. So one time, just one time before the actual exam, you take one actual exam. एक बार असली एग्जाम के पहले एक असली एग्जाम दे के देखते हैं. हो सकता है उसमें से कुछ हम लर्निंग अपनी वापस फाइनल एग्जाम में ले जाना चाहें. वी माइट वांट टू कैरी सम ऑफ दिस लर्निंग इनटू द फाइनल एग्जाम. बस इसके लिए बोल रहा हूँ. यू विल रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंट. उसको एनालाइज करना है, ठीक से देखना है, यहाँ ये कर सकता था, नहीं कर सकता था, ये गलती करी, ओ दिस वाज सो ऑब्वियस, आई फॉरगॉट इट. ऐसा नहीं होता कि ओ आई न्यू दिस, आई फॉरगॉट दिस, आई न्यू दिस इज सो बेसिक, आई गॉट स्टक इन अ पजल, वेस्टेड हाफ एन आवर देयर. नो सच थिंग. फाइन. सो व्हाट यू हैव टू डू, कैरी ऑल योर लर्निंग इनटू दिस वन फाइनल मॉक टेस्ट ऑन 31st. इसमें भी जो भी अब तक की लर्निंग है सब लेकर जाओगे फ्रॉम ऑल योर मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग. ट्राई इट. अगर सब कुछ ऑप्टिमली जाए, इफ यू बिलीव एवरीथिंग वेंट परफेक्ट, वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट ड्रेस रिहर्सल. बट माइट स्टिल हैपन कि कुछ ऐसा खराब हो जाए, यू बिलीव अरे तो करना ही नहीं था, बस एक और चांस मिल जाए इसको ठीक कर लूँ. नहीं लगता कई बार, अरे बस एक और चांस मिल जाए, जस्ट गेट वन मोर चांस, आई विल फिक्स इट दिस टाइम. इसके लिए बोल रहा हूँ. 31st को देना है, उसी टाइम स्लॉट में देना है, मास्क लगा के देना है, यू हैव टू वेयर द सेम क्लोथ्स. Everything has to be exactly similar. You have to maintain the sanctity of the exam. Nobody should disturb you. Take it like that and accept whatever you get. And
carry that learning on the 2nd of January. Got that? We talked about GK. We talked about one very important mock test, full-length mock test. You, needless to say, would not do any new topics from now on. But one thing that I want you to do for these 4 days, today, tomorrow, day after, and the day after that, would be one writing task daily. One writing task daily means 30 minutes, one essay, one letter. 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 Evaluate it yourself. You do not need any external help for that. बस करने की practice करो. So I'm sure many of you have done so many letters and everything before that. Good, but you get into the groove by doing this for the last 4 days before the exam. And you do not need to write. We call it writing. You need to type. So take Microsoft Word, MS Word में लिखना है, type करना है. You have to type there. Where do you get the topics from? Ratnapa sir has shared a list of important topics. You can pick from there. And so one essay, one letter, without much preparation in advance. You should not know. Just look at the list. I'll share that here in this video. Fine. Look at the list. Pick one. Just write it. Pick one letter. Write it. How do you do this? 30 minutes. Exactly 30 minutes, like a mock test. So say you start at 10 minutes past 2. 2:10 पे start किया. So you end at 40 minutes past 2. 2:40 पे खत्म कर दिया. Type करना है एक essay, एक letter. Word limit कितनी रहेगी? For essay you take it between 200 and 250. Fine. 10%, 15% उधर चलता है. So you take that range of 200 to 250 because I don't know what they would say in the actual instructions. You should read the instructions on the day of the exam. So it can be 250, it can be 200, letter can be 150, 120. It varies. Fine. So 10% here and there, it works. So to get as close to the actual exam as possible, I'm saying essay should be between 200 and 250. Letter should be between 120 and 150. On the day of the exam, you'll read the instructions and follow it. 5-10% ऊपर नीचे तब भी चलेगा. That should not be a problem. But for these exercise of taking or doing this writing task 4 times, 200 to 250 essay, 120 to 150 letter. Pick the topic of your choice. Looking at the list that I'm sharing here, video share कर रहा हूँ, उसमें से उठा लो कुछ भी and do it regularly for the next 4 days. If you're bad at writing, you would still do better by doing this exercise. If you're good at writing, it'll be wonderful. It should not happen that on the day of the exam you forget the format of the official letter, leave application, all those things. It tends to happen. Get into that groove. If you start writing regularly, it works. So I cannot change what you have done with your writing skills over the last 1 year. No, I cannot. What I can advise is 4 days, 4 writing tasks, 30 minutes each. ये 2 घंटे अपने लिए दे सकते हो ना, निकालो और करो. Look at it again. You will realize, oh, I made this small mistake. Oh, I made this blunder. I'll not repeat it. Oh, I wrote 280 words. अब मैं क्या करूँ? So I do not want you to come back after 2nd of January and tell me, sir, I wrote 300 words. They said 250. अब मैं क्या करूँ? जो गलती करनी है कर लो. These 4 days, 30 minutes each. हर दिन 30 मिनट, ज़्यादा नहीं है ना. You can spare it for yourself, for your own good. Do it. And the most important item on the agenda, do not overthink. Believe in your ability. Do not read junk. Do not watch junk. Do not speculate. Do not get into that paper prediction mode. कैसा आएगा, क्या आएगा. Do not think about paper being cancelled on 2nd. होगा तो पता चल जाएगा. Do not do any such thing. If you are prepared, you should be excited for 2nd. You would not want that postponement, would you? No. If you want that postponement secretly, आपको चाहिए पेपर कैंसिल हो जाए, बाद में हो जाए, इसका मतलब क्या है? आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, ये काउंटर प्रोडक्टिव है. होगा तो पता चल जाएगा, अभी तो नहीं लग रहा, राइट? कुछ सोचो ही मत इस बारे में. 2 तारीख को पेपर देना है. वी हैव टू टेक द टेस्ट ऑन 2nd. हम 4 डालेंगे एकदम, बस यही फीलिंग आनी चाहिए, तभी बढ़िया करोगे ना अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से ऑब्वियसली, बट तभी अच्छा हो पाएगा ना. कुछ सोचो ही मत. पेपर प्रेडिक्ट करना कोई नहीं कर सकता. कुछ मत पढ़ो, कुछ मत सोचो, इस बार ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट, किसी को नहीं पता यार, कैसे पता है? मतलब एवरीबडी जस्ट स्पेक्यूलेटिंग. क्यों पढ़ना है उसके अंदर? फोकस इन प्रिपरेशन. शट योर सेल्फ टू सोशल मीडिया. जो ज़रूरी है उसके अलावा बंद कर दो सोशल मीडिया. कुछ भी, कुछ ज़रूरी नहीं. कोई टेलीग्राम, कोई फेसबुक, कुछ चाहिए नहीं आपको. कुछ भी नहीं चाहिए. कुछ भी मत देखो. फालतू चीज़ों में टाइम मत खराब करो. दिमाग को पढ़ाई में लगाओ. फोकस करो ऑन योर स्टडीज, ऑन जनरल अवेयरनेस, ऑन दैट मॉक टेस्ट, ऑन कंडीशनिंग योर सेल्फ फॉर द टेस्ट. एक मेंटली प्रेपर भी आप करते हो ना, इट्स 3.5 आवर टेस्ट, अपने आप को तैयार करते हो उसके लिए, वो सब करो. फालतू चीज़ों में मत टाइम खराब करो. दिस लास्ट 4 डे का पीरियड वुड बी सो क्रूशियल फॉर इट. सारी चीज़ें कल्मिनेट हो रही हैं इसके अंदर आके, तो टाइम खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते. अपने को समझाना स्टार्ट करो. मेक योर सेल्फ बिलीव दैट यू आर मेड फॉर इट, दैट यू आर गुड इनफ फॉर इट, दैट यू विल क्रैक इट. It makes a hell lot of difference apart from your skills in quant, English, reasoning, GK and all those things. All that is important, but make yourself believe कि कर सकते हो. रोज़ बताया करो अपने आप को अभी. और जितने भी ये स्पेकुलेटरी वीडियोस वगैरह होते हैं, ऐसा होगा वैसा मत देखो यार. कुछ भी होगा पता चल जाएगा. क्यों देखना है इसको? It's not really required. Tell yourself it's 96 hours or even less than 96 hours left for this very important exam of my life. 4 दिन बचे हुए हैं इस important exam के लिए.
और मैं सब कुछ लगा दूंगा इसके अंदर, और आई शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एकदम एक्साइटेड अबाउट इट। क्यों? सारी मेहनत जो भी मैंने लगाई है सब इसमें जाके ख़त्म होने वाली है, ये इसी के लिए तो करा है ना, फाइन, सो डन इट फॉर दिस, बी एक्साइटेड अबाउट इट। देखना चाहिए मेरे को कि कैसे मैं इंश्योर करूँ कि इस बार ख़त्म हो जाए यार, प्रोसेस ख़त्म करूँ, बहुत दिन हो गए स्ट्रगल करते करते, ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। वन इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी टू स्टे हेल्दी, ईट वेल, स्लीप वेल। यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल इल ड्यूरिंग दिस पीरियड। कुछ भी ऐसा मत करना। कोरोना केसेस आर राइजिंग, you know about the threat of Omicron, you would not want to fall ill. Mask up, कम जाओ, लोगों से कम मिलो, सोशलाइज कम करो, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू कीप योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल शेप, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, ठीक ठाक से रहो, किसी ऐसे आदमी से बात मत करो जो परेशान करता हो, जो नेगेटिव हो, जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में भरे, ये सब मत करो। सारी चीज़ों को ठीक रखना है। 2 जनवरी को वी शुड बी इन द बेस्ट पॉसिबल शेप। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल उस तरीके से रहना है। एक चीज़ फाइनल बोलूँगा मैं आपको, देश के अच्छे दिन सरकारों के हाथ में हो सकते हैं, बट हमारे अपने अच्छे दिन डेफिनेटली हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। लेकर आते हैं यार अच्छे दिन, मेहनत करो, लगे रहो, विक्ट्री विल बी आवर्स।